Hello, my dear friends. This is a Target Pharma represent the lecture series for human anatomy and physiology. Today we are discussing about cardiovascular system, or we can say that circulatory system. So let's start with actual content. So the what is cardiovascular system? So cardiovascular system nothing but the blood circulatory system, and is that the system containing the organs like heart and blood vessel. Means if you can split the word cardiovascular, cardio means heart and vascular means blood vessel. So its combined structure means heart plus blood vessel to form a cardiovascular system. So main function is that to circulate the blood throughout the body and gases exchange between tissue and environment like carbon dioxide and oxygen, then also transport the hormones nutrients throughout the body through the blood vessels through the blood, and also excretion of the waste product from the body. So it are the general function of the blood throughout the body, and heart maintain their pressure and regularization of blood flow throughout the body. Now we are discussing about the general introduction of heart, because heart is the important part to circulate the blood, manage the regulation of blood, and maintain the pressure of blood. So normal dimension of heart. So what is heart? It is a hollow muscular structure, right? It is a hollow muscular structure. So here is that shape is that conical shape, and inferior end called as a apex. So inferior जो भी end है उसको apex कहा जाता है. Then what is the size? So length about 12 centimeter and breadth about 9 centimeter. At its broadest point, जो भी broadest point उसका 9 centimeter उसकी breadth रहती है. Then thickness about 6 centimeter. So here is that the normal dimension of heart. Then we are discussing about the different parts of heart. So here is that first of all we are discussing about the four chambers. So as shown in general figure of heart, so here is that four chamber, two atria, that is right side, and another one is that left side. Then two ventricles, one is in right side and second is then left side. So here is that mark right RA right atrium, then LA left atrium, then RV right ventricle, and LV it is called the left ventricle. So here is that I have mentioned in that particular chamber for understanding purposes. Then blood vessels, we are discussing about blood vessels. So there are the mainly four major blood vessels attached to the heart. So another information is that so heart का जो भी weight होता है it is near about 300 grams. 300 grams उसका weight होता है. Then what is the position of heart? So it is present middle of the body, behind the sternum and between the two lungs above the diaphragm. जी हाँ, diaphragm के above just and टू लंग्स के बिटवीन वो प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टर्नम. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ हार्ट. सो एंड द कवरिंग ऑफ जो भी कवरिंग होती है राइट, आउटर लेयर जो होती है तो उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. पेरिकार्डियम्स आर डिवाइडेड इनटू, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेयर जनरली सुपरफिशियली. सो दीज आर द थ्री layers of heart which are protect to the heart or made up from the three coatings. So here is that epicardium, myocardium and endocardium. So this is the external layer, epicardium, middle layer, myocardium, and inner layer is called as a endocardium. So epicardium, it protects the inner layer of the heart, right, and which is made up from the like connective tissue, and it coated the inner myocardium, providing the smoothy and slippery texture to the heart. स्मूथी एंड स्लिपरी टेक्सचर जो प्रोवाइड करते हैं हार्ट को बाहर के साइड से, तो उसे हम एपिकार्डियम कहते हैं, उसे एपिकार्डियम लेयर कहते हैं. देन मायोकार्डियम, सो दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट. सो मायोकार्डियम इज द मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट वॉल एंड इट इज़ अ मेड अप फ्रॉम द कार्डियक टिश्यू. जो भी कार्डियक टिश्यू उससे वो कार्डियक मसल से वो डेवलप होती है. एंड मायोकार्डियम इज द थिन एट द बेस ऑफ द हार्ट, जो भी बेस है उसके इसमें वो थिक होती है एंड थिन होती है, एंड थिकेस्ट एट द अपेक्स, राइट, जो भी अपेक्स होता है उससे तो थिकेस्ट होती है और थिन एट द बेस साइड. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बेस
and this is called as a apex of the heart. Now third one is that endocardium, जो कि ब्लड की कॉन्टैक्ट में होती है इनर साइड. इट इज़ मेड फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स, राइट. एंडोथेलियल सेल से वो बनी होती है. एंड द सरफेस इन द कोट विथ ब्लड, राइट. कॉन्टैक्ट विथ ब्लड, जो भी सरफेस रहता है एंडोकार्डियम का, इट इज़ कॉन्टैक्ट विथ द ब्लड. दिस इज द जनरल डिस्कशन ऑफ द लेयर. Now we are discussing the most of the interesting part of cardiovascular system. Those I like very much for the explanation. So parts of the heart, right? So heart के यहाँ पे जो भी part है, then we can say that the parts of cardiovascular system means heart and blood vessels. Here is that heart made up from the four chambers. That is true atrium. That is from one is the from right side and another one is from left side. Then two ventricles, same, one is another side right ventricle, then left ventricle, right और left में होते हैं. Then blood vessels, majorly superior and inferior vena cava, superior vena cava and inferior vena cava. Then pulmonary artery, then pulmonary veins, then aorta. Okay, so here is the general description. Aorta, first branch of aorta is called as a pulmonary artery, and coronary sinus is for collecting of the impure blood from myocardium tissue and drop it into the right atrium. Okay, so here is that tricuspid valve, bicuspid valve. There are the mainly four valves. So the right atrium and right ventricle जो मिडल सेप्टम में प्रेजेंट होती है उसे ट्राइकस्पाइड वाल्व कहते हैं. देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जो सेप्टम में प्रेजेंट होती है उसे बाइकस्पाइड वाल्व कहते हैं, राइट. सो इट इज़ अ 3 cups like structure. Here is that 2 cups like structure, right. So is the opening of right atrium towards the right ventricle, and here is that left atrium opening towards the left ventricle through bicuspid valve. Now another thing is that aortic valve, and next thing is that pulmonary valve. So aortic valve regulate the blood flow towards the aorta, and here is that pulmonary valve which are control the blood flow towards the pulmonary valve. Now we are discussing about what are the different function of these blood vessels and actual circulatory mechanism of the blood through heart. So here is that first of all superior and inferior vena cava. What is the function of superior and inferior vena cava? So superior vena cava collected the blood from head side of the body, means upper part of the body, and inferior vena cava collected the blood from lower part of the body, means from foot side. So it collected the deoxygenated blood from upper side and from lower side, and then drop into the right atrium, right. Now here is that half of the right side of the heart collected the impure blood, means occupy the impure blood, and half of the region of heart collecting the oxygenated blood, right. So after it comes into the right atrium, then it drops into the right ventricle through tricuspid valve, right. After the SA node, here is that present the SA node, sinoatrial node. After generation of action potential, right. So जो भी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब डेवलप होता है साइनोएट्रियल वैगस नर्व थ्रू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद यहाँ पे जो एट्रियल वॉल होती है, तो एट्रियल वॉल की तरफ वो जो भी इम्पल्सेस है वो जनरेट होते हैं. द इम्पल्सेस जनरेट होने के बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है. एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम थ्रू साइनोएट्रियल वेव्स, देन साइनोएट्रियल वेव से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है. देन द रिस्पेक्टिव ब्लड जो रहता है हर एक चेंबर में, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड होता है. Then we are discussing about the flow of blood. Then after it's coming to the right ventricle, the impure blood goes into the pulmonary artery, and pulmonary artery carry the impure blood towards the lungs
फॉर द ऑक्सीनेशन पर्पज़। जी हाँ, ऑक्सीनेशन पर्पज़ के लिए पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है। लंग्स में क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन है, हम जब इन रेस्पिरेशन करते हैं तो एल्वुलाई सैक के बाजू के साइड में, एल्वुलाई सैक के सरफेस पे जो भी कैपिलरी है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन की, तो वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। सो हेयर इज़ दैट इम्प्योर ब्लड है तो उसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है एंड एल्वुलाई सैक में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। Then, due to this pressure difference of these gases, the gas exchange between the alveolar sac and blood vessels like pulmonary artery or pulmonary veins. So here is that alveolar में का जो भी ऑक्सीजन है तो वो ब्लड में आ जाता है और ब्लड में का जो भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर एक्सपायरेशन थ्रू निकल जाता है. So here is that the basically gas exchange between the alveolar sac and blood. So here is that our blood get purified or oxygenated. Then after that, the two pulmonary veins from each lungs, that is right side and left side, so they are the 4 number, collecting the oxygenated blood from alveolar sac and then transferred towards the carried towards the left atrium and drop into the left atrium. Then left atrium collected this blood, oxygenated blood, and drop into the left ventricle through bicuspid valve, right? And then through left ventricle the blood pumps into the aorta for the whole body distribution, right? So whole body के distribution के लिए या blood transport के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, जो ब्लड है वो पंप कर देती है एवोर्टा में ताकि पूरे बॉडी के टिश्यू को वो हो सके. सो दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल ही हमने अभी डिस्क्राइब किया कि हर एक जो ब्लड वेसल है उसका काम क्या होता है. जैसे सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा कलेक्टेड द impure blood from head side and lower side of the body part and it drop into the right atrium. Then after that pulmonary artery transport the deoxygenated blood toward the lungs for purification, and then pulmonary vein which are collecting the blood from lungs, purified blood from lungs, and carry toward the left atrium. Then aorta, so aorta receive the oxygenated blood from left ventricle and circulate throughout the body for the circulation of the blood throughout the body. So here is that heart itself required the blood. Heart tissue required the blood, like myocardium tissue, which required the blood for functioning of their functions. Then what is the name is that coronary artery. So coronary artery, it is the first branch of aorta. जो भी फर्स्ट ब्रांच होती है एवोर्टा की उसको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है. सो कोरोनरी artery supply the oxygenated blood toward the heart tissue. Then coronary sinus, these are the branch which receive the impure blood from the cardiac tissue and drop into the right atrium. So right atrium जितने भी deoxygenated blood हैं यानी कि impure blood है वो collect होता है right atrium में. So half of the side of heart containing the impure blood and half of the side of heart is containing the oxygenated blood. So this is the primary function of all blood vessels. So just we are discussing before, this is simultaneous process when the sinoatrial node generate the impulse generation, right? Action potential जब generate होता है, right, due to the potential generation between the cell, cardiac cell, then it transfer the impulses toward the atrial wall. जो भी atrial wall में वो impulse generate होते हैं, then atrial wall में impulse transfer होने के बाद, signal pass होने के बाद, it contract the both atrium and drop their blood into the respective chamber. That is, right atrium drop the blood into the right ventricle, then left atrium drop the blood into the left ventricle. At the same time, tricuspid and bicuspid valve get open and then drop this blood into the respective chamber. After that, this wave of conduction of the heart transport toward the Purkinje fiber bundle of His. So bundle of His receive the this signal impulse generation signals and it transport towards the right and left branch of the Purkinje fibers.
right? So here is that then ventricle contraction done, same time the tricuspid and bicuspid valve get closed एंड देन वेंट्रिकल गेट कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब भी वेव पास होती है बंडल ऑफ ईस एंड परकुंजे फाइबर के पास। एंड देन वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट वेंट्रिकल का जो भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है टूवर्ड द लंग्स। देन द लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो एवोर्टा में जाता है बॉडी को सर्कुलेट होने के लिए। सो दिस इज द बेसिकली जनरल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम कार्डियक साइकिल देखेंगे डिटेल्स में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।